गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स कैंपस ओडिशा। आज आम स्टार्ट करिया कौन ना कॉजेस फॉर फॉलिंग नेचर ऑफ डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व रो फॉलिंग नेचर रो कौन कॉजेस हो पारे। अच्छा, डिमांड कर्व रो शेप कौन ना डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑलवेज इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो लास्ट क्लास में देखिलु कौन ताडो आगे डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल रो मीनिंग कौन ना क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट आर डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस। जहाँ किसी भी प्राइस रो चेंजेस अच्छी ताकू धरिकी आमर क्वांटिटी डिमांडटा किमिति चेंज होची। एदर सेटा इंडिविजुअल बेसिस भी हे पारियो नले कोन पूरा टोटल मार्केट बेसिस भी हे पारियो। सेटा हमें देखथिलु। एबे हमें देखिया कोन ना डिमांड कर्व रो शेपटा किमिति चेंज होची, काहे की चेंज होची हैला। फर्स्ट लाइन देखो, द इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज एटा कोन तार शेप। मार्केट इंपोर्टेंट, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो मार्केट डिमांड कर्व हो शेपटा सबले सेम रहइबो बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अच्छा, इनवर्स रिलेशनशिप माने कोन आमे डिस्कस करथिले ऑलरेडी। प्राइस टा इंक्रीज हेले डिमांड कोन हबो डिक्रीज हबो एंड वाइस वर्सा। सो ए रीजन लागि कोन हमरो जहां भी डिमांड कर्व अछि सेटा सबले कोन हबो स्लोप हबो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एडारो बाकी रीजंस कोन आमे देखिया। फर्स्ट थिंग होची द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हैला। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, एडार मीनिंग कोन ना अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी लेस। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज मोर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी लेस। अच्छा, यूटिलिटी रो मीनिंग कोन कहितली मु ना यूटिलिटी मीन्स व्हाट satisfaction। यूटिलिटी मीन्स satisfaction। मार्जिनल वर्ड टा केबे आसीबो? मार्जिनल वर्ड रो मीनिंग कोन सबोले एडिशनल यूनिट हैला। एडिशनल यूनिट जेबे भी आसीबो सेबे कोन आसीयो मार्जिनल वर्ड टा हमरो सबोले अपीयर हबो। यूटिलिटी रो मीनिंग होची कोन satisfaction। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रो मीनिंग कोन देखो ना, जहाँ किसी भी गोटे स्वीट रो ना कहलो तुम फेवरेट स्वीट रसमलाई, कांस्टेंट एग्जांपल रसमलाई। अच्छा, रसमलाई किए गोटे जण जार भी माने एज्यूमिंग कि तारो एते भी फेवरेट नै कि एते भी लाइक कम फेवरेट नै, एज्यूम करिया एमिति तो से केतेटा जिंस खाई पारियो रसमलाई मे बी गोटे 10टा हैला नहीं ठीक अछि केतेटा 3टा नहीं नहीं 10टा हमें कांस्टेंट एग्जांपल रखियार अछि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देखी। अच्छा हो 10टा जार की बहुत फेवरेट हेथियो तार केसटा हम देखिया हेले 10टा जेतळो को टोटल अछि हमर तो एडा होछि हमर क्वांटिटी, एडा होछि हमर सैटिस्फैक्शन लेवल हैला। तो फर्स्ट रसमलाई जेतळो खाइबो व्हाट वुड बी योर रेटिंग? फीलिंग कोन थिबो 10 on 10 हाँ ना नहीं, इच्छा थाओ न थाओ अलग जिनस बट 10 on 10 थिबो। सेकंड वन 9 ऑब्वियसली 9 ही जिवो। थर्ड हाँ चलेगा और नहीं खाएंगे। फोर्थ 3 नहीं एते कमियो मिठा बांती हिजियो। अच्छा ठीक अछि 6 कर देबा। 5 हेला को 4 ही थियो पूरा हैला। 6 हेला को 1 को पळा आस्थिबो बुझला। 7 हेला को 0, 8 हेला को माइनस नहीं माइनस रहियोनी। माइनस इन द सेंस कोन बांती ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस रे। अच्छा, तो एडी कोन आमे जानलो ना एवरी एडिशनल यूनिट केतरे एडिशनल यूनिट अछि एडी 1 माने 1 टू 2 गलाड को एडिशनल यूनिट्स केतरे हला टोटल तो 2 हला बट एडिशनल यूनिट्स केतरे हला 1 हला। तो एवरी एडिशनल यूनिट टा इंक्रीज हला को हमरो सैटिस्फैक्शन लेवल टा डिक्रीज होछि ना नहीं, डिमिनिश होछि ना नहीं। डिक्रीज माने कोन डिक्रीज और डिमिनिश। अच्छा, कोन पे होछि रीजन कोन ना ह्यूमन बीइंग्स रो जहा किछि भी माने कोन अछि लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन दा अछि सेटा कोन गोटे जिंस जेतलो को कांस्टेंटली ताको मिले मिले जाउथिबो एट अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम सेटा ऑटोमेटिकली कोन हबो ना टोटल यूटिलिटी दा ऑटोमेटिकली डिमिनिश हे जाउथिबो। मे बी सेम जिंसडा जदी लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम रे मिलु चले से ए जिंसडा अप्लाई हबोनी बट जदी कंटीन्यूअसली मिलुची कहिले कोन हबो डिमिनिश हे जाउथिबो यूटिलिटी।
तो सेम जिनसटा से कही देखो according to law of diminishing marginal utility when the quantity of goods is more the marginal utility of the commodity will be less so the consumer demands more goods when the price is less हैला तो से कौन कहूँ ultimately demand will be highest केबे highest रहबो demand will be highest when price is lowest सबुडो कम प्राइस रे सबुडो हाईएस्ट डिमांड ता हमें देखिबा को पाइबा तो अल्टीमेटली सेडा कहूची तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कोन तमे जानि परलो पूरा एग्जांपल डारे बुझेली तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रा गुटे रीजन डिमांड कर्व ता तळको स्लोप करिया पे तो अल्टीमेटली किछ नै माने गुटे यूनिट ता एडिशनल यूनिट ता जेते जेते बॉडी बॉडी जाउथबो हमरो सैटिस्फैक्शन लेवल ता सेते सेते कमी जाउथबो अल्टीमेटली एडा होची तार मीनिंग हैला तो तमे अदर वर्ड्स रेडी लिखि दियो नोट डाउन the satisfaction level of a consumer decreases with the consumption of every additional unit सहित तार satisfaction level ला decrease हेगी जाउथबो so which law is this is law of diminishing marginal utility तापरे देखो substitution effect Substitution effect कौन होची in case of substitutes if the price of commodity X rises relatively to other good Y the consumer will buy less of commodity X and buy more of the commodity Y which has become relatively cheaper this is called substitution effect अच्छा substitution effect जहाँ भी अच्छी सेटा मैं already discuss करछु last class रे सेटा कौन ना दीटा products जेतळगु जोड़ा कि गुट्टे को गुट्टे substitute हेई पारिबो कौन example नेथिलो हमें 7up and Sprite 7up and Sprite जेतळगु हमें नेथिलो 7up रो प्राइस कौन 20 रुपीस सेम क्वांटिटी रो बट Sprite रो कौन प्राइस 40 रुपीस तो जेहेतु आर प्राइस हाई अच्छी लोकाने कौन करंती एटा को सब्स्टिट्यूट वाले नहीं जानती तो एटा को जेहेतु सब्स्टिट्यूट वाले नहीं जानती एटार डिमांड कौन हबो ऑटोमेटिकली कमी जिवो तो एटा को हमें कौन कहूछु ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहूछु दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलरेडी तुम बुझी जाइछो बस टर्म टा देखो इनकम इफेक्ट देखो The income effect tells that the real income of a consumer rises due to fall in price level. Please underline, real income of a consumer rises due to fall in price level. This is called income effect. अच्छा तुमको ये sentence देगी से term टा identify करियो कहियो you have to identify that. देखो कंज्यूमर मानक इनकम टा केतळो को बेसी बेसी हेगी रहइबो माने ताको इनकम टा केतळो को सेव हेगी रहइला आले हम कहि परिया जेतळो गुड्स ताको इजीली माने कम प्राइस रे अवेलेबल होची बुझी पालो ना नहीं सेडागा इनकम इफेक्ट न्यू बायर्स देखो when the price of a commodity decreases the new consumers are attracted to the commodity because when the price level falls it becomes cheaper good than before so the demand will rise when the price falls अच्छा न्यू बायर्स रो किछि भी गोटे माने एन एग्जैक्ट पॉइंट आने किछि नाही न्यू बायर्स हो ओल्ड बायर्स हो केबे तांकाने बेसी प्रेफर करिया गोटे गुडटा जेबे सेटा चीपर अछि तो न्यू बायर्स एक्सेप्शनली प्रेफर करंती कोन चीपर गुड्स अल्टीमेटली जिनस कौन एडी कुआ होची ना केबे गोटे बिजनेस टा मनर स्टार्ट होची बिजनेस स्टार्ट हलाळो हम कोन देखिया पाउछु ना सबले से कोन कम कम प्राइसेस रे स्टार्ट करियो ऑफर प्राइसेस रे से स्टार्ट करबो कोन पे ना न्यू बायर्स अट्रैक्ट करिया पे सेम जिनसडा एडी मेंशन हिच देखो ओल्ड बायर्स व्हेन द प्राइस ऑफ एनीथिंग डिक्रीजेस द ओल्ड बायर्स परचेज मोर गुड्स देन बिफोर अच्छा एडी कोन हबो डिफरेंस कोन एडी ना कंजम्पशन स्टार्ट्स माने किए गोटे नुआ कंज्यूमर टा एटा कोन किनेबा पे ट्राई करला बट एडी कोन होची ओल्ड बायर्स केस रे कंजम्पशन इंक्रीजेस बस एते आगे डिफरेंस है दीडा जा पॉइंट हैला तापर देखो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड द लॉ ऑफ डिमांड जनरली कोन कहूची की प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली रिलेटेड माने कोन प्राइस इंक्रीज हेले डिमांड कमिबो प्राइस डिक्रीज हेले डिमांड इंक्रीज हबो एक्सेप्शंस माने कोन एक्सेप्शंस रो मीनिंग कोन कॉन्ट्रेरी किंबा नॉट फॉलोइंग
माने ए प्रिंसिपल टा फॉलो करू नथे contrary किंबा not following what are the exceptions to the law of demand सेटा हमें देखिया हेले but in certain situations more will be demanded at higher prices and less will be demanded at lower price in such case the demand curve slopes upward from left to right अच्छा एटा होची बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट टा वेरी इंपोर्टेंट मार्क करो पॉसिबल क्वेश्चन एटा ही परियो हला एक्सेप्शनल केस रे डिमांड कर्व रो शेप कोन जनरल केस होची कोन हमें देखिलो अच्छा आईडिया अगर लिख दियो इट विल बी इजी फॉर यू प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड बट एक्सेप्शनल केस कौन कहूँ प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड माने एक्सेप्शनल केसेस रे केते एक्सेप्शनल केसेस रे ए प्रिंसिपल टा फॉलो होची कोड रे हम सेटा देखि देखो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड फर्स्ट थिंग इज अ गिफन पैराडॉक्स गिफन पैराडॉक्स रे मीनिंग कोन अच्छा द टर्म्स हियर आर वेरी इंपोर्टेंट एडी आसी जो देखो गिफन पैराडॉक्स बैंडोगन इफेक्ट वेबलेन इफेक्ट एजा जो आसुची सेटा से कंफ्यूज करिया पे यूज करछ माने ही विल गिव यू द कांसेप्ट बट ही इज आस्किंग द टर्म जदि टर्म टा देकी तुम कांसेप्ट बुझाओ पड़ची देन इट विल बी इजी फॉर यू बट ही इज आस्किंग फॉर द कांसेप्ट ही इज आस्किंग फॉर द टर्म इंस्टेड ऑफ द कांसेप्ट हैला गिफन पैराडॉक्स माने कोन नेसेसरी गुड्स अच्छा नेसेसरी गुड्स केस रे आमे आमे माने एडा गुण रे रखो कि एक्सेप्शंस माने कोन एक्सेप्शंस माने मु कोन कहली प्राइस हाई थिला को डिमांड भी हाई रोज ए केसेस टा केबे होची सेडा हमें देखिया नेसेसरी गुड्स माने कोन जहा भी हमर बेसिक नीड्स माने कोन चावल आटा बार्ली एंड व्हीट फ्लोर मिल्क एउडा को केबे तार रेट बढ़ियो केबे बढ़ियो मते कहलो नहीं प्रोडक्ट्स रो कम सेड छाड़ माने एक्सेप्शनली केबे बढ़ियो ना तूफान अछि कि शटडाउन अच्छी कि पॉसिबली प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी आसीबनी हैला बर्तन को अच्छी बट पर आसीबनी इमती न्यूज अच्छी से केस रे कोन हो प्राइस टा बढ़िबो हेले प्राइस टा बढ़िबो बट सेडी कोन लोक देखिए कि नाइ प्राइस कमिले देखि आली भाबे कि नाइ सेतोड़ आगे प्राइस केते अधिक थिले हेले किनि कि रखि देबे ना नाइ कोन पई ना सेडा कोन हमर नेसेसरी गुड्स तो नेसेसरी गुड्स केस रे लॉ ऑफ डिमांड टा काम करूनी फर्स्ट पॉइंट देखो इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी ऑपरेटेड दिस इज ऑब्जर्व बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गिफन अच्छा तो बेसी किछि कष्ट पड़िया दरकार नहीं जे एडा कहथो से तार ना रखी अगर एडी से नेसेसरी गुड्स खाली लिखि पारथना बट गिफन पैराडॉक्स कोन पे ना मो कहछि तो मो ना हबो He observed in London the low paid workers purchase more of bread when price rises. That's why the situation is called Giffen paradox. तो मैं एते कथा दरकार नहीं हैला एडी लेखो एग्जांपल आमे ओडिसा पिला तो ओडिसा एग्जांपल नेबा फाइलिन टाइम रे कोन होथिला ना गुड्स वेयर प्राइस्ड हाई but demand was also high. Demand was also high. हैला गुड्स हाई प्राइस रे दोथिले काहेकि शटडाउन हेला तापर सामान मिललानी बट सेतळ कोन डिमांड भी अधिक थिला
Then the next point, speculation. Sometimes the price of a commodity might be increasing and it's expected to increase further. The consumers will buy more of the commodity at a higher price than they did at the lower price. It is contrary to the law of demand. अच्छा एटा को केस रे ही पारिबो? मे बी शेयर्स, मे बी गोल्ड. वेरी गुड. गोल्ड केस रे एटा ही पारिबो. काहेंगी पेट्रोल पेट्रोल ले कोन के स्टोर करि पारिबोनी, बट पीपल टेंड टू यूज दैट कि जदि मनर ताको तांकर कोन लॉन्ग ट्रिप अछि तो दे यूज इट टू स्टोर. अच्छा कौन होची ना गोल्ड जेहेतु बढ़ुची तो लोकानर इंटेंशन कौन रहबो जदि आडू अधिक होई जिवो लेवलटा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस. तो तांके कौन करंती ना किणीकी रखी दियंती और कौन अधिक किणीकी रखी दियंती. जेतलो प्राइसटा बढ़ी बढ़ी जाउछ माने कंस्टेंटली बढ़ी जाउची तो तांके कौन करी किणीकी रखी दियंती. सो दिस इज स्पेक्युलेशन. शेयर्स केस रे भी एटा इम्प्लाई होची. शेयर्स केस रे गोटे माइंडसेट थाउची जे भी शेयर होल्डर माने अछंदी जदि प्राइसटा इंक्रीज होची तो कोन एटा परे लाइक बहुत प्रॉफिट दबो त हम किणीकी रखी देबा. Fine. Conspicuous देखो. There are certain goods which are purchased to project the status and prestige. Please underline status and prestige of the consumer. अच्छा केते जिंस अछि जोटा कि स्टेटस और प्रेस्टीज देखिया पे किणंदी हैला. रॉयल एनफील्ड, आईफोन रो वर्जन जब जेतिकी चेंज होथि लोकाने सेटा किणंदी त सेटा गोटे लाइक जार जोड़ा इच्छा हो तो हां शॉप. तो स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ द कंज्यूमर सेटा देखिया पे. तो एडी कोन सेडी भी लॉ ऑफ डिमांड टा इम्प्लाई होनी. प्राइस टा बढ़ले डिमांड टा बढ़ुची आगा सेडार हैला. आईफोन फर्स्ट वर्जन टू सेकंड वर्जन टा कॉस्टली आगा थिबो बट स्टिल पीपल टेंड टू बाय दैट. Then देखो shares are speculative market. It is found that the people buy shares of a company whose price is rising on the anticipation that, anticipation माने कौन? Forward thinking that the price will rise further. Bandwagon effect देखो कि the consumer demand of a commodity is affected by the taste and preference of the social class to which he belongs to. Please underline taste and preference of the social class. एजा होची की टर्म्स हैला. पूरा कांसेप्ट रो की टर्म्स कोन एडी तमे खाली कोन प्रेस्टीज एंड जहा भी स्टेटस ता देखले तमे जान दे पारियो. गोटे फॉरवर्ड थिंकिंग ता देखले जान दे पारियो कि से टर्म वाली कहली तो से टर्म आगे तमे लिखि कि मन रखिबो. तो बैंडवागन इफेक्ट से कौन कहूची ना जहाँ भी तुम सोशल क्लास भितर रोच मनर गोटे हाई क्लास ब्राह्मण ये अच्छी ब्राह्मण कम्युनिटी अच्छी तो तांकर केते जिंस थाउची कि एमिति टाइप ऑफ प्लेट्स माने सिल्वर रो ए प्रकार प्लेट्स जो 0.99 सिल्वर अच्छी इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिल्वर. से सिल्वर यूज करिक जेतळे तांके कोन आइडल्स की प्लेट्स वगैरह आनंती तो तांकर सोशल क्लास टा हाई माना जाय हैला. तो एमिति जे तो होची तो तांके कोन से स्टेटस टा मैच करिया पे माने सोशल क्लास भितरे थिबा स्टेटस टा मैच करिया पे जहां किछ भी परचेज वगैरह करंती तो सेटा कोन हमरो बैंडवागन इफेक्ट. बुझी पालो बैंडवागन इफेक्ट. तो एडी गुटे हमरो स्टेटस एंड प्रेस्टीज टा अछि एडी गुटे कोन टेस्ट एंड प्रेफरेंस अछि. तो दीडा जार कोन डिफरेंस हमरो ना टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज ऑन इंडिविजुअल बेसिस. एटा इंडिविजुअल मनुष्यर शॉक हे पारिबो बट एडी कौन होची ना सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू हे पला बुझला. देन देखो वेबलेन इफेक्ट. वेबलेन इफेक्ट माने कौन समटाइम्स कंज्यूमर डेवलप अ फॉल्स आइडिया दैट high priced goods will have better quality. Please underline high priced goods will have better quality instead of a low priced goods. तो प्राइस जदि कम रखी छु गुड रो भलो गुड भी हो तांके को एते कम रे एते भलो जिंस देई दो ना कोन नाही तो ताको कोन हाई करी के देलागा किनंती केते लोक तो कोन कहउछन से मानको आम लैंग्वेज रे मूर्ख कहउछन बट इकोनॉमिक्स लैंग्वेज रे कोन वेबलेन इफेक्ट हैला. The price of a such good falls, they feel that its quality also deteriorates माने कोन decreases and they do not buy which is contrary to the law of demand हैला. एति की जिंस रहला वेरी इंपोर्टेंट इजा सब तम ए भितरे जो डिफरेंट वर्ड्स आछि जो गिफेन पैराडॉक्स बैंडवागन इफेक्ट वेबलेन इफेक्ट. गिफेन पैराडॉक्स बैंडवागन इफेक्ट एंड वेबलेन इफेक्ट एजा होची इंपोर्टेंट हमर बुझी पाला. देन आछि हमरा टाइप्स ऑफ डिमांड रो कोन थ्री टाइप्स अछि. फर्स्ट देखिए हमें प्राइस डिमांड कौन. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस डिमांड. तो प्राइस डिमांड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी.
खाली अंडरलाइन करियो प्राइस एंड डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो यहाँ आम पढ़ी पढ़ी के आसचु कौन प्राइस इज मु कहली ना यहाँ वेरी इंपोर्टेंट प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। तो प्राइस डिमांड खाली एतिकी कहूँ एंड आर शेप कौन डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बुझीपार दिस इज प्राइस डिमांड। नेक्स्ट आसे हमर कौन इनकम डिमांड। इनकम डिमांड कौन बुझेब देख एटा नुआ जिनस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द डिमांड फॉर गुड्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर द गुड्स तुम निजे कहीदे पार कहीं इकोनॉमिक्स इज योर स्टडी तुम कह कि इनकम जब तुम हाई थी तुम डिमांड केमती थी ऑब्वियसली हाई थी है कहीं पैसा अच्छी खर्च करिया कंप्रोमाइज किसी ना। तो से कौन कौन देख इफ द लेवल ऑफ इनकम राइजेस द कंज्यूमर परचेजेस मोर गुड्स। देख तुम जोड़ा कहल से कि इनकम जो राइज होची कंज्यूमर माने कौन करती अधिक अधिक गुड्स परचेज करती। इफ द इनकम लेवल डिक्रीजेस दे परचेज लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो कौन कह आम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप अच्छे है सांगे सांगे लिखिदेव कौन ना इनकम ऑफ कंज्यूमर is directly proportional to his demand. Income of consumer is directly proportional to his demand. हैला एडार कर्व केमती अच्छी स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम left to right slopes upward from left to right this is income demand curve। आमे देखिलु प्राइस डिमांड आमे देखिलु इनकम डिमांड एबे आमे कोन देखिया क्रॉस डिमांड। अच्छा एडा होची इंफीरियर गुड्स केस रे एडा होची नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स टा मु कई कहितली सेडा गोटे अलग कांसेप्ट अछि सेडा मु पूरा सरला परे बुझेबी ताकि तमे कंफ्यूज होबन। एबे हम देखिया कोन क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड देखो मार्केट इंपॉर्टेंट it shows the relationship between price of one commodity and demand for another commodity। देखो another कहिछि सी सेम commodity नाही another commodity रो डिमांड जेतला हम स्टडी करछु सेटा कोन क्रॉस डिमांड। जदी सेम commodity रो स्टडी करथान सेटा कोन हमरो नॉर्मल डिमांड हैला। प्राइस एंड कोन कहिछि सी देखो प्राइस एंड डिमांड रो दीटा टाइप्स मु जहाँ भी कहूँ सेम कमोडिटी रो जदि आम स्टडी करछु सेम प्रोडक्ट रो आउ एनदर प्रोडक्ट रो गुट्टे भी पॉइंट एमती रहार नहीं जोड़ा कि तुमको कंफ्यूज करवा पर तो ईच इंडिविजुअल थिंग हैज टू बी रिटन क्लियरली। तो सेम प्रोडक्ट कौन प्राइस डिमांड बट अनदर प्रोडक्ट जदि कंपेयर होची सेटा कौन हमर क्रॉस डिमांड। क्लियर देखो it means the demand for one commodity not only depends upon its price but also the price of its substitute goods। अच्छा another commodity को commodity थिबो सेटा substitute goods थिबो and complementary goods। substitute and complementary goods रो मीनिंग कोन कहिथिली substitute goods रो मीनिंग होची टी एंड कॉफी complementary goods रो कोन कार एंड पेट्रोल हैला जोडा कि कॉम्प्लीमेंट करिवो। अच्छा एडी देखो क्रॉस डिमांड रो चार्ट क्रॉस डिमांड जहाँ भी अच्छी एटा टू केसेस हे पारिबो कोन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स एडी जहाँ भी अच्छी मु S1 एंड S2 नौची एडी C1 एंड C2 नौची। तो देखो प्राइस ऑफ S1 is directly proportional to the demand of S2। बहुत important वर्ड है
important statement टा price of S1 is directly proportional to the demand of S2 कौन पे कहूची ना जदी गुटे सब्स्टिट्यूट रो गुटे प्रोडक्ट रो जहाँ भी प्रोडक्ट होची हैला टी रो जदी प्राइस बढ़ी गला कार डिमांड बढ़ियो कॉफी रो डिमांड बढ़ियो काहेंगी टी के प्रेफर करंदिनी से प्राइस रे कोन एडा को शिफ्ट हे जानती जेतु एडा कम रे मिले होची तो एडार कर्व केमती होबो देखो upward from left to right upwards from left to right माने जहाँ भी कर्व एडी अछि एटा केमती जाय छी कॉम्प्लीमेंट्री केस रे कोन हबो ठीक उल्टा downwards from कौन left to right downwards from left to right price of S1 I mean C1 sorry C1 is inversely proportional to demand of C2 demand of C2 जदी कार रा प्राइस बढ़ी जाउची हैला लोक कार किनिया पे आदा प्रेफर करियनी जदी कार नै पेट्रोल रो डिमांड कोन हबो कमियो ऑब्वियसली तो कार रो प्राइस बढ़ला को डिमांड फॉर द जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जहाँ भी पेट्रोल जहाँ भी अछि कोन कमी जबो ऑटोमेटिक डिमांड ऑफ द पेट्रोल विल डिक्रीज ए स्टेटमेंट सब बळे पे मन रखथि हैला जुडेले कंफ्यूज हो एटा मन पड़ो एबे देखिए हमें चेंजेस इन डिमांड एंड चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड एडारो मीनिंग कोन द चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड लीड्स टू चेंज इन डिमांड चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अच्छा मते एबे को डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड केतरा थिला वेरी गुड 7 थिला डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड 7 थिला तो ये कहूची जेतल को डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड चेंज होची ता लागि डिमांड रो कोन चेंज होची तो एडा कोन हबो दीडा केसेस को अराइज करेबो गुटे होची एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आडे होची इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड हैला व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट a change in the price leads to change in demand these changes in demand are called extension and contraction of demand when the price is decreased the demand is extended when the price is increased the demand is contracted हैला तो एडी लिखियो कोन when कौन हबो all other determinants of demand constant and price changes एडा तीला केसेस होता ठीक है लेखा price decrease हेले कोन हबो demand is said to be extended हैला एडी कोन demand is said to be contracted हैला
सब किछि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जहाँ किछि भी हमें पढ़छु सब जगह कांस्टेंट अछि बट प्राइस चेंज होछि तो प्राइस जेतोळ को कोन हबो डिक्रीज हबो प्राइस डिक्रीज हैला हमें गुटे जिंस जानछु कोन डिमांड टा इंक्रीज हबो तो इंक्रीज टा जहाँ भी अछि सेडा हमें केमति डेमोंस्ट्रेट करछु एडी ना एक्सटेंडेड वर्ड सहित डेमोंस्ट्रेट करछु कॉन्ट्रैक्टेड जहाँ भी अछि ता कोन डेमोंस्ट्रेट करछु ना डिक्रीज माने प्राइस टा इंक्रीज हैला को ऑब्वियसली डिमांड टा डिक्रीज हबो से डिक्रीज वर्ड टा एडी कोन ना कॉन्ट्रैक्टेड decrease word is also said as contracted सेतिया जिंस कहिछि सी अच्छा सेकंड केस रे कोन हेची ना प्राइस इज कांस्टेंट प्राइस टा कांस्टेंट अछि बट अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड टा कोन होची चेंज होची तो अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जेतळ को चेंज होची सेडा कोन लीड करछि ना चेंजेस इन डिमांड को लीड करछि तो चेंजेस इन डिमांड जहां भी अछि सेडा हम दीडा केस रे डेमोंस्ट्रेट करछि गोटे होची इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड अच्छा चेंजेस इन डिमांड ता से कोन टू केसेस कहछि इंक्रीज इन डिमांड increase and decrease में कॉल लिखुछ हैला when the demand is increased the new demand curve is formed towards right to old demand curve एडागा तमरा क्वेश्चन आछ हैला ए दीडा पॉइंट का इंपोर्टेंट पूरा पैराग्राफ माने जेतळो को हमर कोन डिमांड ता इंक्रीज होउची तो से कोन कहउची न्यू डिमांड कर्व जहां भी फॉर्म होछ माने गोटे डिमांड कर्व ऑलरेडी ओल्ड ता थिबो तो न्यू डिमांड कर्व जहां भी फॉर्म माने फॉर्म होची सेटे कोडी आसियो ना टुवर्ड्स द राइट टू ओल्ड डिमांड कर्व माने किमती एडा towards the right to old demand curve. In the same way the demand is decreased. अच्छा एडी से दीडा जिंस कहिछि तो कंफ्यूज हे जिवो देखो जदी एडा ओल्ड हे थांदा तो एडा न्यू हबो आ जदी एडा ओल्ड हे थांदा तो एडा न्यू हबो बुझि पालो को केस रे जे इंक्रीज डिमांड केस रे बट डिक्रीज रे कोन होछि ऑब्वियसली एडा जदी ओल्ड हेथिबो तो न्यू एडा हबो डिक्रीज हेछि एडी आ जदी एडा ये हेथिबो इंक्रीज हे थांदा ले कोन एडा न्यू हबो जानि परछो एडा इंक्रीज केस रे एंड एडा डिक्रीज केस रे इंक्रीज माने कोन रे इमति जिवो ग्रेजुअली डिक्रीज माने कोन एडा ऑलरेडी हमें कोन मैथ्स रे पढिछु कि ग्राफ पॉइंट जहां भी अछि हमर पॉइंट इंक्रीज हैला आलगो कोन कर्व ता जहां भी फॉर्म होबो सेटा कोन अपवर्ड लेवल रे फॉर्म होबो एंड जहां भी न्यू डिक्रीज केस रे कम माने कमेबो ऑब्वियसली एडा थि बोली गले ता लेवल ता कमी कमी कि जिवो तो सेम जिंसटा से लिखिछ हैला इंक्रीज एंड डिक्रीज तळे ए जिंस खाली लिखि दबो न्यू डिमांड कर्व ता कोडी फॉर्म हैला new demand curve is formed towards right to old demand curve एडा new DC is formed towards left to कोन old demand एतिया बस एडी कोन राइट और लेफ्ट वर्ड ता इंपोर्टेंट अच्छा मुझे जत्ते ताको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे कमे कमे जाउछ त कीवर्ड्स ता सेते इजीली फाइंड आउट करि पारछ एबे मनर तो मु 10 टा क्वेश्चन देली ए टॉपिक भितर जदी चार जगह एमिति अछि तमे कोन आंसर फाइंड आउट करिया इजी ना नै आ जदी पैराग्राफ वाइज अछि तो आंसर फाइंड आउट करिया सेतिया डिफिकल्ट इवन इफ यू अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लीमेंटरी कोन तमे जानछ सब्स्टिट्यूट कोन तमे जानछ बट डिफरेंस कोडी रहउछि ना इंटरप्रिटेशन बुझि पारला नै ठीक अछि नेक्स्ट क्लास में कौन देखिया ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थैंक यू।